our channel Online School. Today we will learn a lesson from my English book 8 for Standard 8, Unit 3.1 Why English Workshop. ये एक पोएम है और इसके वर्कशॉप हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. If you like our video, please like, share, subscribe our channel and press the bell icon for more videos. So let's start my English book 8, Unit 3.1 Why English Workshop. Let's see question number 1. Read the poem, discuss and complete the following blanks with proper action words और verbs. यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दो दिए हुए हैं. Wood swing, marbles sink, stars shine, winds blow, sun sink, flowers die, ocean ache, fish swim, rain fall, ice melt and bees sting. Now let's see question number 2. Discuss in pairs and write the rhyming pairs of words from the poem. आप लोगों को पेयर्स बनाकर डिस्कशन करना है और इसमें जो भी राइमिंग पेयर्स आए हैं उसको लिखना होगा. नंबर 1 बॉय व्हाई, नंबर 2 व्हाई बाय, नंबर 3 सिंग ड्रिंक, नंबर 4 स्काई डाई, नंबर 5 नोज फ्लोज and number 6 stone pond. Now let's see question number 3. Why this, why that, why then, why now, why not, why by and by. In these two lines the words why is repeated. So it is a figure of speech called repetition. Repetition means it is a figure of speech in which one or more words are repeated in the same sentence. For example, sun, it gives me a great joy. Now find out the lines from the poem which show repetition. इस नज़म में इन दो मिसरों में लफ्ज़ why को बार बार दोहराया गया है और नज़म में जब भी किसी लफ्ज़ को बार बार दो या दो से मरतबा दोहराया जाता है और इसके नतीजे में तासुर को गहरा किया जाता है, उस वक्त इस सनद को रिपीटेशन यानी तकरार कहते हैं. और तो इस पोएम से कुछ वर्ड्स जो रिपीट बार बार हुए हैं वो ढूंढकर आप लोगों को लिखने होंगे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. कंप्लीट द वेब डायग्राम. यहाँ पर एक वेब डायग्राम दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है द लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू नो. और वो जो लिटिल बॉय है वो बार बार व्हाई क्वेश्चंस कर रहा है, तो वो क्या क्या जानना चाहता है वो हमें इस वेब डायग्राम में कंप्लीट करना है. इस डायग्राम में ज़्यादा जगह ना होने की वजह से मैंने इसे पॉइंट्स में लिखा हुआ है. सो फर्स्ट वन इज why rain falls from the sky. Second, why coal should burn. Number 3, why seeds get in the apple core. Number 4, why pop guns should go pop. Number 5, why fish have gills. Number 6, why boys cannot fly. And number 7, why wind comes out from the billow's nose. So इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना होगा. Now let's see question number 5. Complete the following blanks फ्रॉम द पोएम. ये भी पैर एक्टिविटी है. आप लोगों को पैर में डिस्कशन करके ये जो दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसे कंप्लीट करना है. फर्स्ट वन इज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्ड्स इस पोएम से ढूंढकर यहाँ लिखने होंगे. तो मैंने ये कंप्लीट इस तरह से किया हुआ है. स्टार्स, स्टोन, स्काई, विंड, फ्लावर्स एंड क्लाउड्स. और नेक्स्ट है words from the poem related to animals, fruits and insects. तो इसी पोएम से ढूंढकर लिखने होंगे. तो मैंने यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए इस तरह: seeds, apple core, spiders, flies, sting and fish. Now let's see question number 6. Imagine a senior student from your school has won a national level quiz contest. Frame 8 to 10 interview questions that you would ask when you interview him or her at the school assembly about the achievement. आप लोगों को इमेजिन करना है कि आपके स्कूल के एक सीनियर तालिब इल्म ने कौमी सतह पर क्विज मुकाबला जीता है और स्कूल जलसा गाह में इसका इंटरव्यू लेते वक्त इस कारनामे के मुतालिक पूछने के लिए आप लोगों को 8 से 10 सवाल तैयार करने होंगे. तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं. आप चाहे तो इसके अलावा भी क्वेश्चंस बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Congratulations for your great success. How do you feel after winning such a contest? Number 2. Have you received such recognition before? Please give details. Number 3. Who has inspired you to take part in such quiz contest? Number 4.
What were the reaction of your family to this achievement? Number 5. Who else would you give credit of your success? Number 6. How did you prepare for this quiz? Number 7. What is your plan for the future? And number 8. Which books did you refer for this contest? Now next question is word chain. Complete the word chain. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है eat, tiger, run, nose and easy. तो इस चेन को आप लोगों को समझकर अगली चेन कंप्लीट करनी है. तो यहाँ पर हमें पहला एग्जाम्पल देखकर समझ में आ रहा है कि eat का जो लास्ट वर्ड है t, तो नेक्स्ट वर्ड उस t से हमें शुरू करना होगा टाइगर. एंड टाइगर का जो लास्ट वर्ड है r, उससे हमें नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करना है. सो रन, एंड रन का लास्ट वर्ड है n. सो नोज, एंड नोज का लास्ट वर्ड जो है वो है e. तो इससे रिलेटेड हमने इजी लिखा. तो इसी फॉर्मेट में हमें नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वर्ड चेन कंप्लीट करनी है. सो नंबर 1 स्काई. तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं अगला पढ़ लेती हूँ. स्काई, याक, काइंड, डियर एंड रिपोर्ट. नंबर 2 क्लाउड, डक, किंग, गन, नॉटी. नंबर 3 wind, deep, prey, yawn. Number 4 star, ration, nation and nut. Number 5 why, yell, love, eager. तो इस तरह आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. आई होप कि आपको इस पोएम के सारे क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गए होंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. गुड बाय.